आप मुझे बोलने नहीं देंगे, सवाल नहीं पूछने देंगे। क्या कमेंट आया शुक्ला जी उसमें? देखिए, चेक दिया ही नहीं है। दिस इज नॉनसेंस। यू आर सपोज्ड टू पे टू हर, व्हाई शुड यू पे annex the check along with the application? You take out the check and pay her. Madam, you take the check and deposit in your account. ये also इनको ये तरीका है। Now you do one thing, you go and where's your client? अगर ये चेक डिसऑनर हुआ, वो उसमें I will ensure that he is produced here with through police. Interim maintenance का ऑर्डर हुआ है? इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। कब हुआ है? इनको 2,64,000 तो पहले दे चुके। इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कब हुआ है? 4/19 4/19 को हुआ है। और इस ऑर्डर के बाद क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 31/12/18 से पेबल है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, सवाल नहीं पूछने देंगे। नहीं सर, जल्दी में है क्या शुक्ला जी? आज आप ये 4/1/19 का ऑर्डर मॉडिफाई हुआ है क्या? वेकेट हुआ है क्या? तो आपका तो दायित्व बनता है पेमेंट का। इनको 2,64,000 तो कर दिया पूरा, और अभी जो 3 महीने का था वो भी मैंने अंडर प्रोटेस्ट जमा करने के लिए चेक भी जमा कर दिया। सवाल अंडर प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट का सवाल नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर कंप्लायंस करना है। योर प्रोटेस्ट इज ऑफ नो रेलेवेंस, इज एब्सर्ड। चेक जमा किया तो उसको देने का इनको ऑर्डर कर देंगे, कोई दिक्कत। He says check has been dishonored. 4/19 का ऑर्डर था, इनको अकाउंट नंबर देने का था, इन्होंने अकाउंट नंबर दिया नहीं। अब आप ये बताएं, आप पैसा कब जमा करा रहे हैं? चेक पायलट की फाइल में है, तो उसको वापस रजिस्ट्रार को डायरेक्शन कर देते। चेक का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने स्टॉप पेमेंट करके भैया वापस कर दिया उसको। नहीं, स्टॉप पेमेंट करके वापस नहीं किया। क्या कमेंट आया शुक्ला जी उसमें? अभी तो देखिए, चेक दिया ही नहीं है। चेक कोर्ट की फाइल में दिया, आईए के साथ में दिया 3106/2022। 3106/2022। तो ये आप चेक यहाँ क्यों फाइल किया आपने? दिस इज नॉनसेंस। यू आर सपोज्ड टू पे टू हर, व्हाई शुड यू पे annex the check along with the application? It appears you have some ulterior motive to delay the payment. वो इसमें ओरिजिनल के जब बात जाना था वो इसमें लगी। This is absolutely absurd. सब एप्लीकेशन के साथ में You take out the check and pay her. This is of 15/7/22. Madam, you take the check and deposit in your account. ये also इनको ये तरीका है। Mr. Counsel, this practice will not work in my courtroom. In all fairness, you should have paid the amount to her. और अकाउंट नंबर देने इनको डायरेक्शन No. तेरे से डायरेक्शन है। Now you do one thing. You go and where's your client? Where's your respondent husband? क्लाइंट वाज ब्लाइंड। Where does he reside? कहाँ रहते हैं वो? वो झांसी में रहते हैं, वो भोपाल वगैरह। अगर ये चेक डिसऑनर हुआ, वो उसमें I will ensure that he is produced here with through police. Yes. हाँ, मैडम, you deposit this amount today. आप ग्वालियर में हैं, आप जमा करिए इसको। और अगर शुक्ला साहब, अगर 3 दिन में अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो you make a mention. We will ensure that the amount goes to our account. On the next day, feeling with this man would be brought here through concerned police station. Huh? No, check is of July, no? Just see that, check out. ये 15 जुलाई का। जुलाई का चेक है, अगस्त चल रहा है ये। हाँ। आप जमा करिए इसको और परसों आप बताइए हमको ऑन ओरल मेंशनिंग कि पैसा क्या हुआ इसका। देखिए, don't ask your client not to play tricks. And don't give advice also to play tricks. In my courtroom, no tricks. Go straight and be fair. The court order is there to pay her maintenance. You have to pay her. But you cannot avoid payment by mischievously filing the check with the application. In all fairness, should have been given to her. पहले इनको ओरिजिनल दे दिया था, कोर्ट में फोटोकॉपी लगाई थी, इस बार
रीजनल इस चला। ये क्या तरीका है? पहले इनको भी थी, This is not done. Never repeat in the future. देखिए, hard on IA 310622. The respondent husband, instead of handing over the check of interim maintenance ordered by this court on so and so date, 4119, has filed with the instant, has annexed with the instant application. So it's a peculiar mode of avoiding of payment on time. Nevertheless, the check annexed with the application has been taken out from the IA and handed over to Shri Shukla, who is present, Shukla, to hand it over to the appellant wife present in the court for depositing in her account. Stop. If the amounts of check, if the check is not cleared after deposit within 3 days, the Shukla is at liberty to make a mention. List this case for further orders after 3 weeks. आगे के रिप्लाई के देना। You file a reply in between this time. And Mr. Trikhe, ensure that there is no areas of interim maintenance. She should be paid regular interim maintenance till that order survives. हमारा सबमिशन ये है कि इसको सितंबर में फाइनल। Whatever it is, it will come up after 3 weeks. In between, I should not receive any complaint that you have not paid her interim maintenance. You must pay her in terms of the order 4119 with no default. एक महीने का एडवांस जमा करा के रिक्वेस्ट ये Whatever it is, you pay in deposit in advance, you pay month wise. I am not concerned with that. I am only concerned timely payment. She should get, she should survive.